Thank you. So now, what are the factors which affect permeability? First is grain size. Grain size matters a lot. Where it is small or it is in bigger size. See, as कितने बड़े रहे grain size, permeability खुला रहेगा, परमेबल रहेगा। देखिए छोटे 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 रहने से सरफेस एरिया कॉम्पैक्ट होके नजदीक नजदीक आके डेंस होके यहाँ पर परमेबिलिटी कम हो जाता है। दैट विल स्टडी इन डिटेल। सो नाउ द मेन थिंग इज the first factor which affect the permeability is its grain size. What is the size of the grain? Second one is properties of the pore fluid. Properties of the pore fluid. What suppose whatever the fluid is there, so what are its properties? Generally we, in our case, it is water only. So what are its properties? This also affects the permeability. Third is White's ratio of the soil. The most important thing is White's ratio. What is White's ratio? This I told you. So permeability also depends on White's ratio of the soil. Then structural arrangement of the soil particles, how the soil particles are arranged. Structural arrangement is also very important. And next, entrapped air and the foreign material. So in the Whites, what is the entrapped air and what are the some, suppose apart from, so in Whites, apart from water and air, some foreign material is there. That also, I mean, affect the permeability. And then adsorbed water in clay soil. What is adsorbed water? That also I will tell you. These are the factors which affects permeability. This is the common question to be asked in the examination. What are the factors which affects permeability? The factors which affects permeability are grain size, properties of the pore fluid, White's ratio of the soil, structural arrangement of the soil particles, entrapped air and foreign matter, and adsorbed water in the clay soil. Adsorbed water in the clay soil. First of all, we will learn about grain size. What is the effect of grain size? So, permeability varies approximately as the square of the grain size. This is the question in the GATE examination once it has been asked. Permeability varies as the twice the grain size, square of the grain size, thrice the grain size, equal to the grain size, something like it was there. So permeability varies approximately as the square of the grain size. So permeability is increased if grain size, square of the grain size is more. Since soil consists of many different sized grains, some specific grain size has to be used for comparison. Alan Hazel, based on his experiment on filter sand of particle size between 0.1 and 3 mm, found that so this is Alan Hazen, what he has given, linear dependency of the velocity and hydraulic gradient existed. So it all, this is very important. So what Alan Hazen has given is permeability depends on square of the size I told you. So here's what he has given is the permeability can expressed as K is equal to C into D10 square, where K is coefficient of permeability, D10 is effective diameter. How to find this one? You know it very well. How to find this one? D10 effective diameter, and then C is constant, approximately equal to 100 when D10 is expressed in centimeters. So value of C is 100. So this formula is used for deciding the coefficient of permeability. So from this we can say that the coefficient of permeability E varies as the, because this is constant, and if you remove this, K is proportional to D10 square. So K is varies as the square of the D10 square, D10 square. Okay, where K is equal to coefficient of permeability, D10 is effective diameter, and C is equal to constant, approximately equal to 100 when D10 is expressed in centimeter. Attempts have been made to correlate the permeability with this one by Kozny. This is not that much important. All these things, I think at this moment, if you want to go in detail, this is all things are needed. So just for the time being, just to remember, permeability depends on grain size. Permeability depends on grain size, and grain size, how it depends? Square of the
grain size, square of the grain size. Next one is effect of properties of pore fluid. Effect of properties of pore fluid. Okay. So what it says that it is usual to convert the permeability results to a standard temperature. All this means it is, I mean, compared with this one, temperature. So temperature at 27 is given by K is equal to N divided by N27. So temperature of 27 degrees is very important, taken a standard temperature. This can also be important. You should remember this. At this temperature only properties are measured. So just to remember, properties of pore material matters a lot while deciding the permeability. This much is, remember, not those details are not at all needed for your undergraduate score, may be necessary for this one gate, that I will tell you afterwards. Now next is effect of White's ratio. White's ratio also matters a lot. The effect of White's ratio values of permeability can be expressed as this one. So from this one, I mean, if you make the calculations, you will get K1 by K2 is equal to E1 cube by E2 cube. K1 by K2 is equal to E1 cube by E2 cube. And if you draw the graph between permeability and White's ratio, a straight line you will get here. Based on that one, we can say that White's ratio also matters in deciding the permeability. So these three properties I explained you in this slide. First one is grain size, second is properties of pore fluid, and the third one is White's ratio. Okay. Next is effect of soil fabric and stratification, and next is effect of degree of saturation. Of course, it is very important. See, I will tell you how the soil is arranged here. That also matters a lot here. The effect of structural arrangement of soil is very important, whether it is leaving the maximum voids or not. If voids are maximum, then the permeability is more. And next is degree of saturation. See here, if the soil is totally dry, the permeability will be more, definitely, because everything will be air. Water is totally absent here. If it is partly saturated, so sometimes it is air will be there, which reduces the permeability. So once this entrapped air goes, then also permeability will take place. So if it is totally saturated, then it is different. So degree of saturation also plays an important role in permeability. Then effect of presence of foreign matter. Organic foreign matter, if present in soil mass, may be carried by the flowing water towards critical flow channels. So this also may cause, means some foreign matter is present, means it will decrease the permeability. Effect of adsorbed water. So adsorbed water is which is held by the soil particles. It cannot move. It cannot move free by pressure. So such water is called adsorbed water, and it is in clay. So that water also matters the permeability. If that matter is already water is present, means flow will be little bit less. So these are the different factors which affects permeability. These are the important factors which affects permeability. Now after this, let me go to a very 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 important topic, and यही एग्जाम में पूछता मैक्सिमम, ये आपको मालूम भी होना है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसा निकालते हैं in the laboratory. How we are going to find coefficient of permeability? So coefficient of permeability can be found by different methods. One is a laboratory method, second is field method, third is indirect methods. In laboratory methods also two methods are there. Remember, this is very very important topic, generally asked in the examination. In laboratory methods also two are there. One is constant head permeability test, another is falling head permeability test. One is a constant head permeability test, and next is a falling head permeability test. Falling head
permeability test, constant head permeability test and falling head permeability test. So field methods, pumping out test is there, pumping in test is there, and indirect methods also there, from grain size or specific surface, horizontally capillary test, consolidation test. This is not that much for your syllabus. This is a little bit can be asked, but this is very, very important. So remember, as compaction can be found by two tests, one is standard Proctor test, one is modified Proctor test. In the same way, so coefficient of permeability can also be found by two methods. One is constant head permeability and second is falling head permeability. Means in the first step, head of water is maintained. It is kept constant and then K is found. But in falling head permeability test, water is made to fall for a particular time. So this is the difference. Of course, more differences are there. We will see one after the one. So first we will go for, as the name suggests, constant head permeability test. So different formulas are there. Formulas are there for finding the coefficient of permeability. This is the Jackie's formula. K is given by 100 dm square. This is Allen-Hazen formula, already told you. So third is Tesgis formula, and fourth is Cauchy's formula. See, just you go through this, maybe for GATE exam or for higher studies, this is important for, but for not university syllabus. आप कैसा निकालना ये formula याद अब मत रखो आप. So now as exams are within 120-25 days, so more focus we have to on university. So this is not that much important. Now coming to main important thing is, that is constant head permeability test. Constant head permeability test है कि मैं उससे पहले formula derive करता हूँ. Just we derived the formula discharge in कौन से फॉर्मूला में, डार्सीज लॉ में. डार्सीज लॉ में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था? Q is equal to K into A into K into I. Q is equal to A into K into I, or small q is equal to K into I into A. K into I into A. This small q can be represented by capital Q by T. Capital Q by T. Capital Q by T. और ये K as it is, I is H by L. I is H by L. I means hydraulic gradient. Hydraulic gradient is equal to difference of head by L, and this is area as usual. But what we need? We need K. So K is given by Q by T, total of water flowing divided by time. Suppose 1 liter water is flowing for 1 second, means 100 by 1. Then length of this specimen, L by H, H by L, this side when it comes L by H into 1 by A. So this formula you please by heart remember for the constant head permeability test. I will explain this one, how we are going to do this. So Q by T is equal to K H by L into A. So Q is equal to, yes, Q is equal to how much? A into K into I. K as it is, small q is capital Q by T, means total water flowing divided by time. For what time it is flowing? K is as it is, I is equal to H by L, A is area, but I want K here, coefficient of permeability. So K is equal to Q by T into A, उल्टा हो जाएगा इस तरफ आके, L by H into 1 by A into 1 by A. So this is the formula. So this is the formula for constant head permeability test. This is the formula for constant head permeability test. So this is the constant head permeability test. Constant head permeability test. See here, यहाँ से एक ओवरहेड टैंक रहता, ये आपका सॉइल का स्पेसिमन है, ये ओवरहेड टैंक से इसमें पानी आता, ये हाइट h है, हाँ, फिर यहाँ से ये मेजरिंग जार से ये कन्वर्शन होता. So constant head permeability test में देखो, the experiment setup the constant head is shown in this figure. A is equal to area of cross section of soil specimen. ये जो soil specimen रखते हैं आप, हाँ, यहाँ पर इसको, इसका जो area है A है, L is equal to length of this specimen that we know. H is equal to constant head means यहाँ overhead tank से यहाँ तक पानी जो आता है constant maintain करते हैं. That's why it is called constant head. H और Q हम यहाँ जितना पानी आता इसमें से मेजर करते टाइम लगा के.
The constant head h causing flow is the vertical distance between the water levels in the overhead and bottom tank. तो यहाँ जो बॉटम टैंक है, जो ओवरहेड टैंक है, यहाँ से पानी इसमें आ रहा थ्रू द स्पॉइल सिस्टम, इसका जो वाटर लेवल है, इसका जो वाटर लेवल है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल h. This distance is small h. This is the constant head. The constant head causing flow is the vertical distance between the water levels in the overhead and bottom tanks. Then the air vent is provided to drive the air bubbles. Of course, कोई भी एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एयर वेंट रखते हैं, तो फिर करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मालूम नहीं होता, सिर्फ वाटर होना चाहिए, जो भी एयर बबल्स है एयर वेंट से हम निकाल देते हैं. If any observed in the transparent rubber tubing through which water flows from the overhead tank to the soil specimen, after ensuring that the soil specimen is fully saturated, the flow has become steady, the quantity of water Q flowing through the soil specimen is known, interval of time is found, the temperature of T is water is noted. Temperature तो खैर जो बहुत हाईली फॉर्मूले में है वहां यूज करते, हम उसको यहाँ यूज नहीं करते. हमको क्या करना है, यहाँ से एक कांस्टेंट हेड के ऊपर सॉइल स्पेसिमेन रह के पानी को छोड़ना है, और ये जो पानी आता पर्टिकुलर टाइम में कितना जमा होता उसको मेजर करना है. और सपोज करो पानी 1 लीटर रहा तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 1 लीटर, और टाइम 2 सेकेंड रहा तो T इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ये पानी ओवरफ्लो स्पेसिमेन से होने के बाद, कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के बाद, whatever the water is taken here, so that water is Q, that water is Q, and time is T. From the Darcy's law we know that Q is equal to K into I into A. From the Darcy's law, what we know that Q is equal to K into I into A, or Q is equal to Q by T. This already we know that K as it is, I is H by L, A is as it is. So we want K. So when we want K, when we want to take, K is given by Q by T into L by H into 1 by A. So this is the formula for finding the coefficient of permeability in constant head test. In constant head test. If you have any doubts, you can ask. If you have any doubts, you can ask, please. Q is equal to K into I into A. Q by T is equal to K H by L into A. K is equal to QL by AHT. So this is the coefficient of permeability. This derivation is clear. This apparatus diagram is clear. कुछ doubt है तो पूछो. तर परत एकदा सांगा स्लो मध्ये. हाँ सांगतो. हेलो हाँ हेलो let me explain once again this one. You see here what we are doing here. Okay,
द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज, ये हेड रहता है, ओवरहेड टैंक है, म्हणजे ओवर रहता है, छत के ऊपर है समझो ओवरहेड टैंक, और नीचे हम लोग अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सॉइल स्पेसिमन रखते हैं, सब अरेंजमेंट करे सो रहता है लैब में। तो व्हाट इज कॉल्ड कांस्टेंट हेड मींस, इसका अपर लेवल का जो सरफेस है नीचे जहां स्पेसिमन रखे, और ओवरहेड टैंक का जो हाइट है एच यहाँ पर कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो पानी आता, हम एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज निकालने के लिए यहाँ मेजर करते, इतना आपको फिगर मालूम होगा मेरे ख्याल से। तो करते कुछ नहीं, यहाँ से इसमें हम पानी छोड़ते, हेड को कांस्टेंट मेजर करते, जो एक्स्ट्रा पानी मतलब यहाँ जमा होते नहीं जाता, इतना हेड मेंटेन करने के बाद जो पानी आता यहाँ क्यू हम जमा कर लेते। तो यहाँ से आपको कैपिटल क्यू मिलता, कितना लीटर पानी गया और कितने टाइम में आया, टी मिलता। तो यहाँ पर आपको क्यू मिला और टी मिला। सी फ्रॉम दी which formula? Darcy's formula. From the Darcy's formula, Q is equal to, from the Darcy's formula, Q is equal to K into I into A. ये तो मालूम है आपको। From the Darcy's formula, Q is equal to K into I into A. मालूम हो रहा आपको? Q की जगह Q by T, देखो टोटल डिस्चार्ज बाय टाइम, मीटर क्यूब पर सेकेंड करते ना डिस्चार्ज को आप, तो यहाँ जितना पानी है डिवाइड बाय टाइम करो, Q by T इक्वल टू K. K is coefficient of permeability as it is रखो, I is gradient, gradient is H by L, जो head है divided by length of the specimen, और A is area of cross section, इसमें से K निकालना है आपको, K is equal to Q into L divided by A into H into T, ऐसा अरेंजमेंट कर लो। So here K is called coefficient of permeability, here K is called coefficient of permeability, and it is given by K is equal to QL by AHT. QL by AHT. This is the formula, please. I hope this is very much clear to you. This is very much clear to you. ठीक है? So now shall I go for which one? That is falling permeability test. Falling permeability test. So falling head permeability test, first I will explain the things, or shall I show the figure? I will explain the things and then I will show you the figure. So falling head permeability test, as the name it is given, so here water is made to fall from one height to another height for a particular time. So that's why it is called falling head permeability test. So earlier it was constant head permeability test. So what the falling head permeability test says, the constant head permeability test is used for coarse grained soil, whereas a reasonable discharge can be collected in a given time. However, the falling head test is used relatively less permeable soil where the discharge is small. तो सबसे पहले ये मेजर डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। तो पहला डिफरेंस याद रखो, कांस्टेंट हेड जो है हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को यूज करते हैं, जो मोटे रहते हैं दाने सॉइल के, क्योंकि वहां पर परमेबिलिटी ज्यादा रहता है, हम डिस्चार्ज करेक्ट कर सकते। जबकि फॉलिंग हेड हम यूज करते किसके लिए, ये फाइन ग्रेन क्ले पार्टिकल सिल्ट के लिए। जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी है ये लेस परमेबल सॉइल के लिए यूज करते, जहां डिस्चार्ज कम है, और कांस्टेंट हेड हम यूज करते जो मैक्सिमम है, मतलब जो साइज बड़े हैं। दिस इज द फर्स्ट द थिंग यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट, a standpipe of known cross sectional area A is fitted over the permeameter. Of course एक stand sectional pipe रहता, फिट करते हम, उसमें से पानी आता। The water level in the standpipe constantly falls. Observation started after steady state of flow. इसमें कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर एक पाइप रहता, पाइप में क्या रहते, पहले हम एक पर्टिकुलर 5 सेकेंड के बाद कितना वाटर हेड है उसमें देखते, उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद वाटर हेड H2 कितना है, तो H1 और H2 के से आने तक टाइम कितना रहता T, वो आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल है। देखिए, दिस इज दिस वन, दिस इज द स्टैंड पाइप, दिस इज सॉइल स्पेसिमन, दिस इज मेड टू वाटर टू फोल्ड। सो जो आपको वहां पर हेड कांस्टेंट रहता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता, शुरू में जो वाटर हेड है आपका, इट इज H1,
सपोज टाइम T1 है, उसके बाद आफ्टर टाइम T2 इसका वाटर हेड H2 आया, तो ये टाइम कितना होता, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 करो, वो टाइम मालूम होता, और ये शुरू का हाइट है, ये बाद में का हाइट है। बस इतना चीज आपको मालूम रहना बस है। दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ फॉलिंग हेड सेटअप। कुछ सेटअप नहीं है, कांस्टेंट हेड था, यहाँ पर थोड़ा ये है। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस let h1 and h2 be the heights. This also you know very well, h1 और h2 क्या है, दोनों की हाइट है, that also you know very well. Once you know the h1 and h2, other things are very easy. Darcy's law यहाँ पर है, देखिए, हाँ, तो Darcy's law देखिए, Q is given by, Q कैसा देते हैं आपको, टोटल डिस्चार्ज बाय टाइम। तो टोटल डिस्चार्ज यहाँ पर देखिए, हाइट h है, a है एरिया, एरिया इनटू हाइट विल गिव टोटल वाटर, तो दैट इज एज इट इज फॉलिंग वी आर टेकिंग नेगेटिव, सो q इज इक्वल टू माइनस dh इनटू a बाय dt टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू फ्रॉम द डार्सीज लॉ q इज इक्वल टू KIA, so this value is equal to KIA and I is equal to hydraulic gradient, and hydraulic gradient is given by h by l. So now K, I की जगह लिखो h by l, प्लीज डेरिवेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। K एज इट इज रखो, बंद करो, डिस्टर्ब करते रहते। ओके, सो कमिंग हियर, K एज इट इज है, I की जगह h by l है, A एज इट इज है, and minus dh by dt into A. I have taken this side. What is this one? Minus dh by dt into A as it is. So what I did now, जरा बड़ा करता हूँ इसको, जरा डेरिवेशन अच्छी तरह देखो, K h by l into A minus dh by dt into A, सब अरेंजमेंट कर रहा मैं, सिर्फ I की जगह h by l है। अब क्या करता हूं मैं, dh है, ये h इस तरफ लाता हूं, मतलब h के फंक्शन सारे इधर ला लो, बाकी का सब इधर लेकर आओ। So A into K divided by small a into L into dt is equal to minus dh by h, ये सारा इधर ला लो और ये इधर ला लो। This is with respect to t, this is with respect to h, h के फंक्शन एक तरफ ला लो, बाकी के सब एक तरफ लाके, याद रखो यहाँ k कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, L लेंथ ऑफ दिस स्पेसिमेन है, A जो है कैपिटल एरिया ऑफ दिस स्पेसिमेन है, स्मॉल a इज एरिया ऑफ ट्यूब, और h इज इक्वल टू हाइट ऑफ फॉल है, दैट इज h1 माइनस h2। अब ऐसा आने के बाद इसको इंटीग्रेशन करो, विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे, इसलिए ये सभी कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, a k a l, एंड सिर्फ dt को इंटीग्रेशन करो फ्रॉम t1 टू t2, और इस तरफ विथ रेस्पेक्ट टू h इंटीग्रेशन करो, दैट इज फ्रॉम h1 टू h2, नेगेटिव साइन बाहर रखो, a k a l और यहाँ dt t1 टू t2, dh by h। अब ये ऐसे रहने दो, मैं बाद में इंटीग्रेशन करता हूँ। dh by h का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा log h होता, मालूम है ना, dh by h का इंटीग्रेशन log h होता है, यहाँ पर log h लिखो, और वैल्यूज है h1 और h2। इस तरफ इंटीग्रेशन देखिए, ak by al होता, विथ रेस्पेक्ट टू t रहने से t होता है, इसका इंटीग्रेशन 1 है, t होता, अपर लिमिट t2, लोअर लिमिट t1, सो t2 माइनस t1, और इधर log e, पहले h1 रखो बाद में h2 रखो, which can be written as log h1 by h2। प्लीज इसमें के सारे स्टेप्स देख लो, ये डेरिवेशन बार बार पूछता, इसका नॉलेज जरूरी है आपको, कुछ है तो पूछो मेरे को, 2 मिनट्स टाइम आई विल गिव यू। If you have any doubts, you can ask in this derivation. If you have any doubts, you can ask in this derivation. मैं इंटीग्रेशन करा, पेपर लेके आप करो, खुद देखो, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, ओके बेटा, so shall I move further? ओके, सो इसके बाद देखिए t2 minus t1 is taken as t, we know that, so this becomes akal, इधर t2 minus t1 की जगह t लेता हूं, ये तो log h1 by h2 as it is, तो मुझे क्या चाहिए इसमें k is equal to
ये इंटू एल, ये ऊपर जाता, ए इंटू टी ये नीचे आता, log E H1/H2 ये फॉर्मूला है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये है नेचुरल लॉगरिथम, इसको हटा के बेस 10 में कन्वर्ट करे तो ये फॉर्मूला आ जाता। So K is equal to 2.3 ALAT log 10 H1/H2. So this is the formula for coefficient of permeability in falling head test. In falling head test. Yes. Any doubt, please? If you have any doubts, you can ask here. ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से ये फॉर्मूला कैसा है एक्चुअली, ये log E को log 10 में कन्वर्ट करे तो 2.333 समथिंग कुछ आता, ओनली 2.3 आई हैव टेकन, बाकी का सब एज इट इज। हो सके तो पिछला भी देखो, उससे पहले वाला भी देखो, ये डेरिवेशन आप परफेक्ट कर लो। दिस स्लाइड टुडे आई विल शेयर इट, this slide today I will share it. Q is equal to volume by time. Volume is given by area into height. As it is falling, we have taken negative. Q is equal to minus dH into A by dt. And this is equal to K into I into A, where I is hydraulic gradient. I is hydraulic gradient. So now what we will do, instead of hydraulic gradient, we will write H by L. So K H by L into A and this minus dH by dt into A. अब क्या करो, dt एक तरफ ला लो, dH एक तरफ ला लो। तो dH के साथ सिर्फ H रहता, इसको T1 से T2 तक इंटीग्रेशन करो और इसको आप इंटीग्रेशन करो H1 टू H2 तक, इसका इंटीग्रेशन log बनता, इसका इंटीग्रेशन T बनता। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, log A माइनस log B इज log A by B, तो आपको A स्टेप आ जाता। कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, जिसको सीखना है। हो सकता है एमसीक्यू में नहीं पूछता, बट यू शुड नो द थिंग्स, यू शुड नो द थिंग्स। कुछ डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ो। सो वंस यू गेट दिस वन, नाउ T2 माइनस T1 को T बोलो तो A K A L T इज इक्वल टू log H1 by H2, लेकिन मुझे K चाहिए, K इज इक्वल टू A L ऊपर जाता, A T नीचे आता, A L डिवाइड बाय A T into log E H1 by H2, and this log E is now replaced by log 10, and that is K is equal to 2.3 AL by AT log 10 H1 by H2. So this is the formula. This is the formula. कुछ डाउट्स है तो प्लीज यू कैन आस्क, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट, डाउट नहीं है ना बेटा, समझ में आया? Yes, sir. Okay, these are the two important tests. One is constant. Constant का तो बहुत इजी है, Q is equal to K into I into A, फिगर बना सकते हैं आप, ओन कुछ भी लिखो चल जाता। कर वैसे उस टाइप का एग्जाम अब है नहीं, तो ये दो में से एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम में पूछ लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको परमेबिलिटी के नोट शेयर करूंगा, तो उसमें देख लो, या नहीं मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस चेंज क्या है कि कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को यूज करते, जबकि फॉलिंग हेड टेस्ट जो है हम लोग यूज करते इसके लिए जहां फाइन ग्रेन सॉइल्स है, जैसे कि क्ले और सिल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में मेथड क्या है, इसमें हेड को कांस्टेंट रखते, इसमें हेड फॉलिंग हेड में हेड को चेंज करते T1 टू T2। इसका फॉर्मूला है ये K इज इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू दिस मच। एग्जाम में आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर डेफिनेटली विल गेट इन MCQs आल्सो, सो यू शुड बी वेरी मच परफेक्ट, very much perfect.
ठीक है, तो इसके बाद एक और छोटा सा ब्रेक ले लो और आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर।